Very good morning, students. I hope you all are great and doing good in your studies. So today we are going to do our chapter 5, which is more on Adobe Animate. In this chapter, we will be going to learn about more in the terms of animation. So let's learn about new features and tools in Adobe Animate in this chapter without wasting any further time. The name of our chapter is more on Adobe Animate, and the topics which we will discuss in this chapter are advantages of using Animate CC, frame by frame animation, adding symbol of library, animation on symbol, saving a document in Animate CC, opening an existing Animate CC document, and closing an Animate CC. Now we have an amazing thought. Education is the key to unlocking the world, a passport to freedom. Now we have an activity which says write the correct steps to open Animate CC. So our step 1 will be click on start button. Then in step 2, type and search Animate. Then step 3, select Adobe Animate. Then in step 4, click to open Animate. Now let's start. Kavya says, "Hi Mayank, how's everything going?" He replies, "All's well, Kavya. What about you?" Then she says, "Quite well, Mayank. We have learnt about Animate CC in our previous chapter." Then he says, "Kavya, there are many features that we have not discussed in the previous chapter." She says, "What? Can we do many more things in Adobe Animate?" Then he says, "Yes, Kavya, we shall learn all of these things step by step." Then she replies, "Then what are we waiting for? Let's start learning." So, one way to share information about your ideas or thoughts in an entertaining and understandable way is to use animations. That means जब आप अपने ideas और अपने thoughts को express करना चाहते हो तो एक बहुत entertaining और बहुत understandable way होता है which is animation. Animation क्या देता है? Life to your ideas and ये connect करता है एक huge variety of people all across the globe. Adobe Animate CC एक सॉफ्टवेयर पैकेज है by Adobe जो allow करता है आपको to use drawing tools for creating your imaginations and a movie editor to make animation and games. ये एक part है of Adobe Creative Cloud Server series which was earlier popularly known as Adobe Animate Professional. Advantages क्या है Animate CC को use करने की? ये एक multimedia graphic program है specially for use on the web to create animated text, graphics and games. Animations created using this software commonly used किए जाते हैं to display advertisements and games on the web page. ये use करता है vector graphics which means that जो graphics है they can be scaled to any size without losing clarity and quality. It does not require programming skills and is easy to learn. फाइनल आउटपुट जो होता है वो साइज में छोटा होता है एंड पब्लिश किया जा सकता है इन फैमिलियर प्लेटफॉर्म जैसे HTML5 कैनवस, एनिमेट प्लेयर एंड एयर, वेब जीएल एंड इवन स्नैप एफसीजी. फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन क्या होता है? एनिमेट सीसी एनिमेशन जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लिटिल रेक्टेंगुलर फ्रेम्स जिनको हम बोलते हैं सेल्स. ये जो सेल्स है ये अपीयर होते हैं टाइमलाइन पे और जो की फ्रेम्स है वो स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेम्स होते हैं. आप यू कैन एट्रीब्यूट सम चेंजेस, आपको चेंजेस क्रिएट कर सकते हो जैसे कलर, पोजीशन, शेप एटसेट्रा. आप क्रिएट कर सकते हो इमेज इन ईच एंड एवरी फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन इन एनिमेट सीसी सॉफ्टवेयर. तो एनिमेटिंग अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है ऑन की फ्रेम डॉट इन लेयर 1. देन आपको एक स्टार ड्रॉ करना है ऑन द स्टेज यूजिंग पॉलीस्टार टूल एंड फिल इट विथ रेड कलर. Then click on insert, then timeline, then keyframe to insert a keyframe in frame 2 with the copy of the star. फिर आपको या फिर आप प्रेस कर सकते हो F6 की को to insert a keyframe in the next frame with the copy of stage object. Select
द स्टार एंड फिल ऑरेंज कलर, स्टार को सिलेक्ट करके ऑरेंज कलर फिल करना है, शिफ्ट करना है स्टार को टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द स्टेज लाइक दिस। देन आप प्रेस F6 की भी कर सकते हो टू इंसर्ट अ की फ्रेम इन फ्रेम 3। नाउ अगेन सिलेक्ट करना है स्टार एंड फिल येलो कलर एंड शिफ्ट स्टार टूवर्ड्स राइट साइड अगेन दिस साइड ऑफ द स्टेज। फिर आप अगेन प्रेस करोगे F6 की को टू इंसर्ट की फ्रेम इन फ्रेम F4। नाउ अगेन सिलेक्ट करना है स्टार फिल करना है ग्रीन कलर एंड शिफ्ट द स्टार टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द स्टेज। Then click on Control Text option to preview the animation. Similarly, आप एनिमेट कर सकते हो फुल मूवी एनिमेशन। एडिंग सिंबल टू लाइब्रेरी, अगर आपको अपनी लाइब्रेरी में कुछ सिंबल एड ऑन करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ड्रॉ करना है एक बॉल यूजिंग ओवल एंड लाइन टूल्स। फिर आपको क्या करना है, क्लिक ऑन सिलेक्शन टूल टू सिलेक्ट द एंटायर पिक्चर। देन आप क्लिक करोगे मॉडिफाई मेन्यू पे एंड सिलेक्ट करोगे कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन को, विच इज दिस ऑप्शन। देन एक कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा लाइक दिस ऑन योर स्क्रीन विद द बिहेवियर ऑप्शंस। नाउ आपको टाइप करना है नेम बॉल एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। नाउ द सिंबल इज एडेड टू द एनिमेट सीसी लाइब्रेरी। आपको डिलीट करना है बॉल फ्रॉम द स्टेज एंड ड्रैग करना है सिंबल को, बॉल को फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑन टू द स्टेज। राइट क्लिक करोगे आप स्टेज सिंबल पे एंड क्लिक करोगे एडिट सिंबल्स ऑप्शन पे। सेलेक्ट करना है सिंबल का पार्ट एंड चेंज करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। देन क्लिक ऑन सीन 1 टू एग्जिट फ्रॉम द सिंबल एडिटिंग मोड। एनिमेशन ऑन सिंबल, एनिमेशन एक रैपिड डिस्प्ले होता है ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ मूवमेंट, ताकि आप उन सर्टेन मूवमेंट्स का एक इल्यूजन क्रिएट कर सको और वो एक एनिमेशन बन जाता है। तो एनिमेट सीसी एनिमेशंस जो है वो क्रिएट करे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्विनिंग, जिसका मतलब है इन बिटवीन। तो जो एक्ट ऑफ फिलिंग होता है ऑल द फ्रेम्स इन बिटवीन, उसको बोला जाता है ट्विनिंग। ये प्रोवाइड करता है एक शॉर्टकट फॉर द एनिमेशन। तो सेम एज फॉर द फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, हमारे पास दो मेन टाइप ऑफ ट्विन एनिमेशन होते हैं इन एनिमेट सीसी, विच इज मोशन ट्विन एंड शेप ट्विन। तो अगर हमें मोशन ट्विन क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, ये एक टाइप ऑफ एनिमेशन होता है जिसके अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन की फ्रेम। तो जब हम स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन जस्टिफाई करते हैं वो हमारा मोशन ट्विन होता है। एंड मोशन ट्विन वर्क करता है सिंबल्स के ऊपर एंड ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर टेक्स्ट के ऊपर इन द स्टार्टिंग की फ्रेम, एंड देन वो चेंज करता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। You can only animate one object on a layer at the same time. Now follow the given steps to create motion twin. सबसे पहले आप ड्रैग करोगे अपने सिंबल को फ्रॉम द लाइब्रेरी या फिर आप फ्रेम 1 पे क्लिक करोगे when you want to start the animate. Then double click on the layer 1 and rename the layer name ball and press the enter key. अब आपको अपने पॉइंटर को प्लेस करना है टू फ्रेम 30 इन द टाइमलाइन टू सिलेक्ट इट एंड राइट क्लिक ऑन द ग्रे फील्ड बिलो 30. द की फ्रेम 1 to 30 विल बी सेलेक्टेड। फिर आपको क्लिक करना है इंसर्ट की फ्रेम ऑप्शन पे या फिर आप F6 की का यूज कर सकते हो टू इंसर्ट न्यू की फ्रेम। नाउ सेलेक्ट द बॉल सिंबल एंड ड्रैग इट टू द राइट साइड ऑफ द स्टेज। Click on the timeline at any of the place between frame 1 to frame 30 and then right click on the mouse button. आपको सेलेक्ट करना है क्रिएट मोशन ट्विन ऑप्शन को, एक लाइट ग्रेइश ब्लू कलर का बार और ब्लैक एरो अपीयर हो जाएगा ऑन द फ्रेम 1 बिटवीन द फ्रेम 1 एंड फ्रेम 35. देन क्लिक ऑन कंट्रोल मेन्यू एंड क्लिक ऑन टेस्ट ऑप्शन विच इज दिस, या फिर आप कंट्रोल प्लस एंटर का यूज कर सकते हो टू व्यू द इफेक्ट्स ऑफ मोशन ट्विन एंड यू विल गेट अ मूविंग बॉल। मोशन गाइड ट्विन, एक टूरिस्ट ट्रैवल करता है कोई भी प्लेस विदाउट हैविंग नॉलेज अबाउट द प्लेस, तो विद द हेल्प ऑफ अ मैप सम पीपल फॉलो करते हैं गाइड के इंस्ट्रक्शन को एंड ट्रेवल करते हैं थ्रू देयर रूट। तो सिमिलरली मोशन गाइड ट्विन जो है ये एनिमेट करता है एंड सिंबल्स और ऑब्जेक्ट्स को टू मूव ऑन देयर गिवन ट्रैक। तो फॉलो द गिवन स्टेप्स टू डू मोशन गाइड ट्विन। सबसे पहले आप एक बॉल ड्रॉ करोगे या फिर उसको इंपोर्ट कर सकते हो, convert it to a symbol and delete it from the stage. फिर आपको कॉपी को ड्रैग करके लाना है बॉल की फ्रॉम द लाइब्रेरी टू द स्टेज। क्लिक ऑन फ्रेम 40 इन लेयर ऑन द टाइमलाइन एंड देन प्रेस करनी है F6 की टू इंसर्ट अ की फ्रेम। फिर राइट क्लिक करना है फ्रेम 1 पे और चूज करोगे आप क्रिएट क्लासिक ट्विन को। क्लिक फ्रेम 40 एंड आपको सेलेक्ट करना है बॉल टू प्लेस इट टू द राइट साइड ऑफ द स्टेज। फिर आप राइट क्लिक करोगे ऑन लेयर 1,
एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा, सेलेक्ट द एड क्लासिक मोशन गाइड ऑप्शन which is this. Now animate CC insert करेगा एक new layer on the top of layer 1 with the motion guide icon to the left of the layer's name. आपको लेयर के नेम पे क्लिक करना है जब भी वो बोलता है गाइड लेयर 1। फिर आपको क्लिक करना है पेंसिल टूल पे, ड्रॉ करना है पाथ विच यू वांट टू बी फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट व्हाइल इन मोशन। आपको एक वो पाथ ड्रॉ करना है जहां पे आप चाहते हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एनिमेट में मूव करे। क्लिक ऑन द फ्रेम 1 एंड पोजीशन द बॉल so that उसका जो center है is at the beginning of your motion guide. Now the center is indicated by small plus sign when selected. एक black circle appear होगा when the ball is attached to the motion guide. Now release the mouse button when the ball is attached to the guide path. फिर आपको फ्रेम 40 पे जाना है और रिपीट करना है प्रोसेस को बाय ऑफ प्लेसिंग द बॉल एट द एंड ऑफ द मोशन गाइड। फिर क्लिक करना है कंट्रोल पे, टेस्ट ऑप्शन पे, या फिर आप कंट्रोल प्लस एंटर की का यूज कर सकते हो टू प्रीव्यू द एनिमेशन। सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन एनिमेट सीसी, अपने डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना होता है? तो आफ्टर कंप्लीटिंग आवर वर्क हमें हमेशा अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहिए। तो टू सेव अ डॉक्यूमेंट सबसे पहले आप क्लिक करोगे फाइल ऑप्शन पे, सेव एज पे क्लिक करोगे या फिर सेव पे फ्रॉम द मेन्यू बार, देन एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन सेव बटन और उससे पहले आप अपने फाइल नेम बॉक्स में एक नेम दोगे अपने डॉक्यूमेंट को, फिर सेव बटन पे क्लिक करोगे, आपका फाइल जो है वो .fla एक्सटेंशन के साथ में सेव हो जाएगा। नाउ अगर आपको कोई आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनिमेट सीसी का डॉक्यूमेंट है जिसे आप ओपन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फाइल मेन्यू पे जाना है, ओपन ऑप्शन को चूज करना है, एक ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पे आपको अपनी आपकी जो डिजायर्ड फाइल है उसकी लोकेशन फाइंड करनी है, देन क्लिक ऑन इट, ओपन बटन एंड सिलेक्टेड फाइल विल बी ओपन। क्लोजिंग एनिमेट सीसी, क्लोज करने के लिए एनिमेट सीसी को आप अपने फाइल मेन्यू पे जाओगे और सिंपली क्लोज बटन को चूज कर दोगे टू क्लोज द animate CC. Let's revise the chapter. An animation is a technique in which images are put together to appear as moving images. When we create a new animate movie, it contains one layer. Keyframes are special type of frames. Animate CC animations are created with the help of tweening. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. The type of animation in which we create the motion by making changes in every frame is frame by frame. Little rectangular frames are called cells. Document in animate document is saved with the extension .fla. Dash is a rapid display of sequence of images to create an illusion of movement animation. Let's do fill in the blanks. Adobe Animate is a dash graphic program tutorial. Cells appear on the timeline. There are dash main types of tween animation. 2. Animate CC animations are created with the help of tweening. You can only animate one object on a layer at the same time. Let's do true false. Act of filling all the frames in between is called tweening. True. We can save our work in Animate CC. True. But we cannot save our work in Animate CC. False. Animate CC requires programming skills. False. Motion tween is used with objects that are not symbols and ungrouped. False. Document in Animate CC is saved with .fl extension. True. So students, this was a complete chapter about Adobe Animate. I hope the chapter is clear to you. Do revise it once again and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.